तो हम बात करेंगे इसमें हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। मैंने बहुत सारे वीडियो अभी हाल ही में डाला हुआ है क्विक रिवीजन के लिए, आप उसको देख सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। मैंने उस पर बहुत काम किया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, repeatedly asked questions I have uploaded for both paper English literature and paper 1, so you must have to check for better preparation. तो जो क्या हुआ? छोटा हो गया। मम्मा छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया। तो जो के बढ़ते ग्रोथ के लिए जूनियर हॉर्लिक्स। इसका डीएचए प्रोटीन जैसे 27 न्यूट्रिएंट्स बच्चों की फिजिकल ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करता है। जूनियर हॉर्लिक्स, पोषण पूरा तो ग्रोथ पूरी। So let's start questions. सबसे पहले हम क्योटो प्रोटोकॉल के क्वेश्चंस लेते हैं। The Kyoto Protocol was entered into force in the year, and here the right answer is 2005. Kyoto Protocol was entered into force in the year 2005. So please keep in mind. The next question is clean development mechanism was first introduced in which of the following international agreements? Clean development mechanism was first introduced in which of the following international agreements? Clean development mechanism को कौन से इंटरनेशनल एग्रीमेंट में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था? तो यहाँ पे भी जो राइट आंसर है वो क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्योटो प्रोटोकॉल एम्स एट, क्योटो प्रोटोकॉल के क्या एम्स हैं? एंड हियर द राइट आंसर इज containing emissions of greenhouse gases. ओके, क्योटो प्रोटोकॉल के एम्स क्या हैं कि ग्रीन हाउसेज जो वातावरण को पॉल्यूट कर रही हैं, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं, उन पे रोक लगाना है ना, उनको कम से कम उत्सर्जित होने देना। Kyoto Protocol is related to, and we can easily understand that Kyoto Protocol is related to climate change. Okay, it works for betterment of climate. Okay, so come to the next question. In which of the following places were amendments to the Kyoto Protocol adopted? कौन से places में Kyoto Protocol के amendment को adopt किया गया था? And here the right answer is Doha. Okay, Doha is the right answer. Next question is Kyoto Protocol was signed by member countries at Kyoto, Japan in which year? कौन से ईयर में क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया गया था? इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था, जापान में साइन किया गया था। ओके, एंड विच ईयर? 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटोकॉल दैट रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन इज, एंड डेफिनेटली हियर ऑल्सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, क्योटो प्रोटोकॉल. So now we can understand that Kyoto Protocol is talk about the climate change, the reduce of greenhouse gases. Now come to the next questions, and now we'll talk about the Montreal Protocol questions. Okay, and the very first question is identify from the options given below the co-benefits of Montreal Protocol. इन options में से हमें जो co-benefits जो हैं Montreal Protocol के, उनके बारे में बताना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है हम आगे के क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, और अभी हम उसके बेनिफिट्स और किस तरह से ये काम करता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो को बेनिफिट्स क्या है? ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर है। क्या है? रिडक्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस।
जितने भी प्रोटोकॉल हैं वो इन्वायरमेंट पे ही काम कर रहे हैं, है ना। जो पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में हो रहा है उसके रिडक्शन पे ही काम कर रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल एज assertion and other is reason, and you have to find out the right answer. Here assertion is a Montreal Protocol is one of the most successful international conventions, and the reason is the parties to the protocol have successfully phased out 100% of their ozone depleting substances. Okay, so assertion क्या कह रहा है कि Montreal Protocol is one of the most successful international conventions. Yes, it is right. Okay, जितने भी प्रोटोकॉल्स आए हैं उनमें सबसे सक्सेसफुल कौन है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट. द रीजन इज द पार्टीज टू द प्रोटोकॉल हैव सक्सेसफुली फेज आउट 100% ऑफ देयर ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेज. नो, इट इज़ नॉट राइट. ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज सक्सेसफुल, इंटरनेशनल सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल, बट ये 100% जो है ये अपना काम किया और 100% सक्सेसफुल हुआ है ओजोन डिप्लेशन के सब्सटेंस को रोकने में, तो ये सही नहीं है. ओके, कुछ ना कुछ कमियां तो रही गई हैं, उस पर लगातार काम हो रहा है. तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है. ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स रेफर्स टू. अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए काम करता है? फेजिंग आउट द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस. ओके, तो ये ओजोन डिप्लेशन पे काम करता है. ओके, क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो किस पे काम कर रहा था? क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहा था. और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो मोस्ट सक्सेसफुल रहा है वो किस पे काम कर रहा है? ओजोन डिप्लेशन पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है द ओनली UN treaty related to environmental issues which has been ratified by all 197 UN members states is. तो कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि मोस्ट सक्सेसफुल रहा है और जिस पे 197 UN मेंबर्स की सहमति रही है ना. तो यहाँ पे जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही है राइट आंसर. ओके, next question is to put the world on a least cost pathway to limiting global warming to 2 degrees Celsius above the pre-industrial level global greenhouse gas emissions by 2030 with reference to 2017 require reduction to the extent of. ये कह रहा है कि हमें कितना ग्रीन हाउस गैसेस में रिडक्शन करना होगा, उसके एमिशंस में कितना रिड्यूस करना पड़ेगा कि हम 2030 तक और 2017 में जो बैलेंस बना के चल सके, क्योंकि 2030 तक और भी बहुत ज़्यादा एमिशंस होने लगेंगे. तो उसको बैलेंस करने के लिए कह रहा है कि ज़्यादा नहीं हो, वो 70 तक जितना 17 में होता था उस लेवल तक जाने के लिए, है ना. तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 25% है. ओके, हमें कितना ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा? 25% रिड्यूस करना पड़ेगा, जिससे कि हम बैलेंस बना सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मल्टीनेशनल फंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज सेट अप टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज parties to Montreal Protocol. Okay, whose annual per capita consumption and production of ozone depletion substances amount is less than. यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है कि एक मल्टीनेशनल फंड जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिया जा रहा है और वो उन्हीं को दिया जाएगा जिनके यहाँ की ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस कम से कम हो. ओके, उनके एमिशंस कम से कम हो रहे हों. ओके, उनके यहाँ ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस कम मात्रा में रिलीज हो रहे हों, और कितना रिलीज हो रहे हों वो अमाउंट होना चाहिए 0.3 kg से कम होना चाहिए. ओके, उन्हीं को ये मल्टीनेशनल फंड दिया जा रहा है, उनकी सहायता की जा रही है. अगर उनके यहाँ ओजोन डिप्लेशंस पे कंट्रोल किया जा रहा है तो उनको फंड दिए जा रहे हैं कि इस क्षेत्र में और आगे काम करे. वो अच्छा काम कर रहा है, उनको और अच्छा काम करने के लिए फंड दिया जा रहा है.
Next question is, which of the following is the central aim to strengthen the global response to the threat of climate change by keeping global temperature rise this century well below 2 डिग्री सेल्सियस? तो कौन सा एग्रीमेंट है जिसका सेंट्रल थीम क्या है कि जो थ्रेट है क्लाइमेट चेंज है, उस ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको कम किया जाए, 2 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जाए। तो कौन से एग्रीमेंट में ये सारी बातें हैं? यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, पेरिस एग्रीमेंट। ओके, all the environmental works, all the issues, all the protocol, Montreal Protocol, Kyoto Protocol, all are working for the betterment of environment, and the Paris Agreement is about the keeping global temperature rise this century well below 2 degrees Celsius. Next question is, as per provisions of Paris Agreement, the intended nationally determined contributions are to be reviewed every 5 years. Okay, here the right answer is 5 years. In every 5 years, the Paris Agreement, the intended nationally determined contributors are to be reviewed. Next question is, climate pledges under Paris Agreement cover what fraction of greenhouse gases emission reduction needed to limit the global warming below 2 degrees Celsius? And here the right answer is, the fraction is 1/3. Okay. Next question is, formulation of long-term low emissions development strategy by each country was suggested under. So low emissions strategy जो है वो किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था? कौन से एग्रीमेंट में ये सजेशंस दिया गया था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस हैं उनको कम से कम किया जाए, बिलो 2 डिग्री सेल्सियस किया जाए, ओके, एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। ओके, सो कौन से एग्रीमेंट में हुआ था ये? पेरिस एग्रीमेंट में। आज की डिस्कशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, एंड very soon I will come with another video lecture and will discuss the important topics of both papers, English literature as well as paper 1. You can join my online course also, where we provide daily 2-hour discussion classes as well as the complete notes of both papers. Okay, thank you, stay blessed.
Hello friends, welcome again to my channel. I'm Archana Singh and today's Hello friends, welcome again to my channel. I'm Archana Singh. Very first question is the research method which focuses on establishing causal relationships with control among variables independent, moderated and dependent is called. तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा रिसर्च मेथड है जो कि किस पे फोकस करता है, कॉजुअल रिलेशनशिप के एस्टैब्लिशमेंट पे फोकस करता है और किसके साथ, वेरिएबल्स को कंट्रोल करके। ओके तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, कॉजुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश की जाती है, तो ये कौन सा मेथड है, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम 2 वेरिएबल्स लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हम अभी कोरोना का एग्जांपल्स ले सकते हैं कि जो कोरोना डिजीज़ है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है एंड जो साइंटिस्ट लैब में उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वैक्सीन यहाँ पे क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स। ओके उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो वैक्सीन को डॉक्टरों ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, उस पर बहुत सारे प्रयोग किए कि कैसे इसको और भी बेस्ट बनाया जाए, है ना, इसको मैनिपुलेट किए। तो इस तरह के जो मैनिपुलेशन है, कंट्रोल है, वो किस पे किया जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। एंड ये दोनों जो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, ये सब किसके पार्ट हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड के। तो आगे से जो क्वेश्चन आएगा उसका आप ध्यान रखेंगे कि ये सारे जो वर्ड्स आए तो निश्चित रूप से वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडिग्म्स। यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च के फीचर्स के बारे में पूछा गया है। ओके तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इट इज़ हाइपोथेटिक डिडक्टिव, ये डिडक्टिव होते हैं। येस क्वांटिटेटिव रिसर्च इज डिडक्टिव, ओके डिडक्टिव इन नेचर, एंड क्वालिटेटिव रिसर्च इज इंडक्टिव इन नेचर। ओके इट इज़ फोकस्ड ऑन नेचुरल सेटिंग, नो इट्स qualitative research which focus on natural setting or not quantitative research. Okay it lays stress on generalization to the population characteristics. Yes it is the characteristic feature of quantitative research that it focus on generalization to the population characteristics, and it emphasizes numeric data from a large numbers of people. And this is also the quantitative research because quantitative research is focused on numeric data, right? Option number A क्या है? It says that the literature review plays a minor role but justify the problem. No, it's not a right option. So here the right option which is features the characteristics of quantitative research is option number A, C and D. So here the right answer is option number 1. Okay, now come to the next question. Next question is, what is the usual sequence of steps in scientific method? Okay, so scientific method of research के sequence क्या हैं, किस तरह से ये sequence में हम follow करते हैं, उसके बारे में question पूछा गया है। तो options देख लीजिए। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन जो है बी, फेल्ट नीड विच इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, तो ये पहला स्टेप होना चाहिए, है कि नहीं, कि जब हम ये महसूस करते हैं कि ये जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और हमको इसका सॉल्यूशन खोजना है ना। जब हम फील करेंगे कि इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है तभी तो हम सॉल्यूशन खोजेंगे ना। तो पहला स्टेप क्या है कि फेल्ट नीड विच इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। ओके एंड देन ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिफाई द डिफ़िकल्टी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन। ओके तो पहला तो नीड है, फील करना है, उसके बाद उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। ओके फिर क्या करना है,
फिर है हाइपोथेसिस मेकिंग बाय आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स। अब क्या करना है कि उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन खोजना है। हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, सपोजिशन है कि उसका हम एक काल्पनिक सॉल्यूशन खोजते हैं। ओके, तो वेरिएबल्स को पहचान कर हम उसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया, है ना। उसके बाद क्या है, ऑप्शन नंबर ई, है ना, कलेक्शन ऑफ डाटा यूजिंग एप्रोप्रिएट रिसर्च टूल्स। अब हम डाटा कलेक्ट करते हैं रिसर्च टूल्स की हेल्प से, एंड देन डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ओके, सो लास्ट स्टेप है हमारा क्या, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीटी हेल्प्स अ रिसर्चर इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग्स। किस क्षेत्र में आईसीटी जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिसर्चर्स को हेल्प करती है। तो पहला ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग रिसर्च एरिया एंड आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन सोर्स थ्रू सर्चिंग वेरियस ऑनलाइन पोर्टल। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि आईसीटी जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारा हेल्प करता है रिसर्च एरिया को आइडेंटिफाई करने में और एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने में, एंड देन सर्च करने में, वेरियस ऑनलाइन पोर्टल्स को सर्च करने में आईसीटी हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, लिटरेचर सर्वे एंड क्रिटिकल एनालाइज known information for further reading. Yes, it is also राइट ऑप्शन, क्योंकि आईसीटी इसमें भी हेल्प करता है लिटरेचर सर्वे में और इसको क्रिटिकल एनालिसिस करने में, एंड फिर इंफॉर्मेशन देता है फर्दर रीडिंग के लिए। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो डेफिनेटली आईसीटी डाटा कलेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो रिसर्च में आईसीटी का अभी तो सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो बहुत हेल्प करता है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। कौन सा मेथड जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च को फॉलो करता है। ऑप्शंस आर कंसेप्चुअल अप्रोच, एम्पेरिकल अप्रोच, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ओके, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं। ओके, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, हम न्यूमेरिक डाटा को फॉलो करते हैं, गैदर करते हैं और उसके बेसिस पे अपना रिसर्च करते हैं। वहाँ सारा कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है, कुछ भी अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होता, है ना। जैसे कि सर्वे मेथड हैज़ अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके, यहाँ पे हम कुछ अपने मन से नहीं कहते, अपनी फीलिंग्स को नहीं व्यक्त करते हैं ना। जो भी डाटा कहता है उसके आधार पे हम अपने रिसर्च को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है। क्वेश्चनर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके, क्वालिटेटिव रिसर्च में किस अप्रोच को हम फॉलो करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच को। फॉर एग्जाम्पल, इंटरव्यू मेथड इज़ अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च एंड इट हैज़ एन अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि एक अभिनेता का इंटरव्यू लेते हैं, फिल्म के हीरो का इंटरव्यू लेते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आपकी सबसे अच्छी मूवी कौन सी है। तो जब हीरो ने बताया कि मुझे ये अपनी मूवी अच्छी लगती है, मुझे मेरी सारी मूवी में ये मूवी बहुत पसंद है, तो हम उनसे अगेन पूछते हैं कि इसमें क्या ख़ास बात है कि जो आपको यही मूवी पसंद है और सब नहीं पसंद है। तो हीरो के आंसर के अनुसार हम अपना क्वेश्चन फिर से क्रिएट कर लेते हैं, है ना। हमने कोई क्वेश्चनर नहीं बनाए रखी है क्वेश्चन के कि इसके बाद मुझे ये पूछना है। हम उस इंटरव्यू में जो हीरो हैं उनके आंसर के अनुसार क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या फॉलो कर रहे हैं, अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ओके, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करते हैं एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन के क्वेश्चंस है। असर्शन है एक्शन रिसर्च इज बेसिकली अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च अमर्ज्ड ड्यूरिंग द 1940s। असर्शन क्या कह रहा है कि एक्शन रिसर्च जो है वो किसका पार्ट है, अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है, टाइप है।
एंड ये कब इमर्ज हुआ था? ड्यूरिंग द 1940. ओके, एंड रीज़न क्या कह रहा है? रीज़न कह रहा है कि एक्शन रिसर्च एम्प्लॉयज investigative and analytical research method to evolve practical solutions to any given problem based research. तो यहाँ पे रीजन क्या कह रहा है कि एक्शन रिसर्च इन्वेस्टिगेटिव एंड एनालिटिकल रिसर्च मेथड एम्प्लॉयज करता है, किस लिए? टू evolve द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम बेस्ड रिसर्च. ओके, तो यहाँ पे रीजन भी सही है ना, और असर्शन भी सही है. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन. असर्शन क्या है? असर्शन इज क्वालिटेटिव रिसर्च हैव हायर डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. क्वालिटेटिव रिसर्च हैव हायर डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. क्वालिटेटिव रिसर्च के पास क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है. ओके, तो हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था कि क्वालिटेटिव रिसर्च कैसे अप्रोच को फॉलो करता है? अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करता है ना. तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होगी, क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो होगी ही, है ना. क्वांटिटेटिव रिसर्च में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो किया जाता है. ओके, तो असर्शन यहाँ पे सही है. रीज़न क्या है? In qualitative research, the response of the participants determines the question researchers should ask next. Okay, तो रीज़न क्या कह रहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं. किसके अकॉर्डिंग? रिस्पॉन्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स. हम जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका रिस्पॉन्स क्या है उस क्वेश्चन पे, उसके अनुसार हम क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं. जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था पिछले क्वेश्चंस में कि जब हम एक इंटरव्यू सेशन में एक फिल्म का हीरो का इंटरव्यू लेते हैं फॉर एग्जांपल, और हम उससे पूछते हैं कि आपकी अच्छी फिल्म कौन सी है, और वो बोलते हैं कि मेरी ये अच्छी फिल्म है, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज कर देते हैं कि क्यों, इसमें ऐसी क्या बात है ना. तो रीज़न भी सही है और असर्शन भी सही है. तो यहाँ पे क्या होगा? बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस फॉर रीडिंग स्किल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च. कौन सा सीक्वेंस सही है रीडिंग स्किल की रिसर्च के कंटेक्स्ट में? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4. ओके, फर्स्ट वन इज सर्वे, देन क्वेश्चन, देन रीड, then recall and then review. Okay, so right answer is option number 4. Next question is a research scholar while finally reporting the research results in the form of a thesis acknowledges the support of his/her supervisor in the preface. This will be treated as, and here the right answer is option number 4, part of ethically. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च इज हेट्रोजेनियस इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक विल इंश्योर. ओके, तो अगर रिसर्च पॉपुलेशन जो है वो हेट्रोजेनियस हो, विभिन्न बहुजातीय हो, विषम हो, तो हम कौन सा सैम्पलिंग मेथड को यूज करेंगे? ओके, तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्ट्रैटिफाइड random sampling method. Okay, so all the questions are very important, you should keep in mind. Okay, next question है कि a college teacher does research with a view to depict the reality situations relating to home conditions of student and hostels provided for. Which of the following research format will be helpful to do so? तो यहाँ पे कॉलेज टीचर रिसर्च करता है in the reality situation relating to home condition of student and hostels provided for. Okay, तो यहाँ पे जो appropriate research format होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, participant observation based research यहाँ पे appropriate होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च द स्कोप फॉर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इज आउटमोस्ट. कौन सा ऐसा रिसर्च है जिसमें कि
क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन का स्कोप जो है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, आइडेंटिफाई वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसिस। तो वेरिएबल्स को पहचानना और हाइपोथेसिस करना, है ना। हाइपोथेसिस क्या है? टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। ओके, सपोजिशन, हम रिसर्च करने से पहले क्या करते हैं? उसका सॉल्यूशन खोज लेते हैं। तो ये क्या है? एक काल्पनिक सॉल्यूशन खोजते हैं, तो ये हाइपोथेसिस है। तो वेरिएबल्स को पहचानना और हाइपोथेसिस इज द मोस्ट क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव प्रोसेस। ओके स्टूडेंट, वी स्टॉप हियर. Very soon we'll come with another video lecture, so don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon for more updates. You can join our online course for daily 1-hour discussion classes and notes. You can call or WhatsApp us on given number. Okay, thank you. Stay blessed. Hello friends, myself Archana Singh. Today's video lecture will discuss last year asked questions of teaching aptitude. जो हमारे पिछले एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं 2021 में, टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चंस आए हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं मोस्टली लेवल ऑफ टीचिंग के लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे डिस्कस करूँगी। तो मोस्टली क्वेश्चंस मैंने लेवल ऑफ टीचिंग्स के लिए हैं। There's 3 level of teaching. We all know: memory level, understanding level, and reflective level. So without wasting time, let's start. So very first question is asking about the phrase TL model of teaching implies that. Here TL model means teaching learning model of teaching implies that. Please check the options. सो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के वो हम कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब हम ऑप्शन देखते हैं, आप अच्छे से ऑप्शन देखेंगे तो पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो काफ़ी हद तक सही है और यही सही आंसर है। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट। या वी कैन सॉल्व इट बाय कॉमन सेंस दैट येस, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट. The next question is the goal of teaching as compared to training is to provide opportunity of. अगर हम सिंपल शब्दों में इसको समझें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन कह रहा है कि टीचिंग का ऐसा क्या गोल होता है, कौन सा अपॉर्चुनिटी टीचिंग प्रोवाइड करता है जो कि ट्रेनिंग में प्रोवाइड नहीं किया जाता. ओके, सो इफ़ वी रीड all the options very clearly, we will get answer very easily that option number 2 is right. Sharing and caring leading to critical and creative reflection. तो हम कह सकते हैं कि जो गोल है टीचिंग का वो क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, शेयरिंग एंड केयरिंग का, जो कि आगे चलकर क्या लीड करती है, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन. ओके, सो दिस इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करने जा रहे हैं वो लेवल के क्वेश्चंस होंगे. देयर्स 3 लेवल्स इन टीचिंग. वी ऑल नो द मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल. व्हाट्स इन मेमोरी लेवल? इन मेमोरी लेवल वी मग अप. ओके, इट इज़ बेसिकली टीचर सेंटर. स्टूडेंट को लेसन दिए जाते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, उनको वो रटना होता है, उनको याद करना होता है. तो इस तरह के जहाँ क्वेश्चन आए, जहाँ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, लेसन दिया जा रहा है, उसको याद करना है, तो वो मेमोरी लेवल के क्वेश्चंस होंगे. अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है कि एग्जाम्पल्स की बात किए जाते हैं, फैक्ट्स की बात किए जाते हैं और ऐसा बात किया जाता है कि वो स्टूडेंट खुद अपनी बात को रख सके, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हुई. अंडरस्टैंडिंग लेवल में ही ना हम अपनी बात को भी रख सकते हैं. जब अंडरस्टैंड करेंगे तभी तो स्टूडेंट अपनी बात को भी रख सकेंगे. तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, फैक्ट्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं और अपनी बातों को अपने शब्दों में रख सकते हैं, तो वो क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया. और रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल होता है. जब प्रॉब्लम की सॉल्विंग करने की बात होती है तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है. तो क्वेश्चंस मोस्टली इससे आज पूछे जाते हैं और थोड़े घुमा के पूछे जाते हैं जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. सो डोंट बी कंफ्यूज.
जितने बड़े क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन देख के कंफ्यूज कर जाते हैं और क्वेश्चन आते हुए भी उसको गलत करके चले आते हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दिस, रीड ऑल क्वेश्चन वेरी क्लियरली, वेरी केयरफुल्ली, एंड जब हम अच्छे से उसको पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो और इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चंस। What are the basic requirements for organizing teaching at understanding level? So यहाँ पे understanding level की बात हो रही है, तो options देख लेते हैं। Options A क्या है? Giving large number of positive and negative examples of fact and concepts being presented. तो मैंने कहा था कि जहाँ facts और example की बात हो रहे हों वहाँ पे वो understanding level ही है। तो ऑप्शन नंबर A राइट है। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या है? प्रेजेंटिंग फैक्ट्स विथ फोकस ऑन रिमेंबरिंग द बेसिक फीचर्स अंडरलाइंग देम। तो यहाँ पे याद करने की बात हो रही है। ओके, फैक्ट्स तो है बट रिमेंबरिंग द फैक्ट्स। सो जहाँ पे भी रिमेंबरिंग की बात आई तो वो क्या है? मेमोरी लेवल है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट नहीं है, और हम क्या करेंगे अब? एलिमिनेशन मेथड को लेंगे और ऑप्शन नंबर बी जितने भी ऑप्शंस में हैं उनको हम ऐसे ही हटा देंगे। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो कहाँ कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में है और ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 हम काट देते हैं। ओके, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 को हम जब काट देते हैं तो हमारे पास अब 2 ऑप्शंस बच गए हैं, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 1। सो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दीज ऑप्शंस ओनली। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी हम देखते हैं तो क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग डिस्कशन टू एग्जामिन द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ एन इश्यू। तो यहाँ पे डिस्कशन है, एग्जामिन करना है, इशू है, तो ये क्या है? ये भी अंडरस्टैंडिंग लेवल की है। तो ऑप्शन नंबर डी भी अंडरस्टैंडिंग लेवल के है। और ऑप्शन नंबर ई जो है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू गिव देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स प्रेजेंटेड। तो यहाँ पे स्टूडेंट को अपनी भी बात रखनी है, उनको अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन देनी है, खुद के फैक्ट्स की जानकारी देनी है। तो यहाँ पे ई भी सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ए, डी और ई, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। So we can solve all these questions by elimination method also. Okay. Next question जो है वो पूछ रहा है कि जो ये थ्योरीज हैं मेमोरी लेवल के, रिफ्लेक्टिव लेवल के, ये किन्होंने एडवांस किए हैं, किन्होंने दिए हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है मॉरिस एल बीगे। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, next question is identify the characteristics and basic requirements of reflective level of teaching. Okay, so now we will discuss the reflective level of teaching. चलिए सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शंस क्या है? टीचर प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज सिस्टमेटिकली टू हेल्प रिकॉल देम व्हेन नीडेड। यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने के बाद हम समझ जाते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है, रिकॉलिंग की बात कर रहा है, मतलब कि मेमोरी रिमेंबर की बात कर रहा है। तो ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है ना, और ये टीचर इसमें हेल्प कर रहा है, टीचर सेंटर्ड है, तो निश्चित रूप से ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। सो ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि टीचर कंडक्ट्स ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेस टू फिक्स अप द आइडियाज इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अगेन यहाँ पे टीचर ही सारा वर्क्स कर रहा है, इट इज़ अ टीचर सेंटर्ड, वो सारा एक्सरसाइज कर रहा है, इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ जो है वो इस तरह से कह रहे हैं कि सारा फिक्स हो जाए स्टूडेंट के माइंड में, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट खुद से कुछ नहीं कर रहा है, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। व्हाट इज़ डूइंग इज़ ओनली टीचर डूइंग। सो इट इज़ ऑल्सो टीचर सेंटर्ड एंड इट इज़ ऑल्सो अ मेमोरी लेवल टीचिंग। ऑप्शन नंबर सी है इश्यूज आर रेज्ड एंड डिस्कस्ड विद अ व्यू टू शिफ्ट द पोटेंशियल रैशनल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्यूशन की बात हो रही है, इश्यू की बात हो रही है, वो उठाए जा रहे हैं, उसको डिस्कस किया जा रहा है, प्रॉब्लम के सॉल्विंग को डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल और टीचिंग है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। टीचर आस्क स्टूडेंट टू गिव एग्जाम्पल्स एंड पैरेलल आइडियाज़। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं,
आइडियाज़ हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं। ऑप्शन नंबर ई जो है, एकेडमिक sessions are conducted in a dialogic mode to explore and explain the basis of argument। तो ये भी रिफ्लेक्टिव है। डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कब करते हैं? जब हम उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हो जाते हैं। ओनली देन वी विल एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वी विल एबल टू डिस्कस एनी इश्यू। ऑलराइट, तो रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं, एक इश्यू लेके चलते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना, उस पर बात कर सकते हैं। हम अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हो चुके हैं, हम अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो चुके हैं और हमारे जो आइडियाज़ है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी एंड ई आर राइट। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग के और हमेशा ही पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ क्लियर योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट, क्लियर योर कंसेप्ट अबाउट लेवल ऑफ टीचिंग एंड आई एम श्योर दैट इन कमिंग नेट JRF एग्जाम again questions will be from there. So now let's discuss next question. Next question is about understanding level of teaching. Okay, so come to the options. Option 1 क्या कह रहा है कि teacher stress reciting of facts and information. Again it was memory level of teaching. Now we can easily find out that it is memory level of teaching because it is teacher centered and teacher is stressing that you have to recite all the information and facts. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा एग्जाम में कि जितने भी ऑप्शन ए वाले जो ऑप्शंस हैं उनको काट देना है ना। तो हमें ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3 को हटा देना क्योंकि ये आंसर नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए गलत है तो हमें इनको काट देना है। सो नाउ अभी हम बी और सी को छोड़ देते हैं, बी और सी ऑप्शंस को अभी छोड़ देते हैं। हम अब आते हैं किस पे, डी पे। ऑप्शन नंबर डी आप देखिए, द टीचर इंसिस्ट ऑन रिकॉल एंड रिकॉग्निशन ऑफ फैक्ट प्रेजेंटेड। तो अगेन टीचर्स इंसिस्ट टू रिकॉल, ओके, अगेन रिमेंबर की बात हो रही है, मगअप की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो हमें उन सारे ऑप्शंस को काट देना है जिसमें कि डी है। तो ए पहला तो हमारा ऑलरेडी कटा हुआ था, फिर दूसरा और तीसरा भी हम काट देते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन बचा क्या, 4, ऑप्शन 4, जिसमें कि बी, सी और ई है और वही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम बहुत इजीली जो है वो आंसर कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। ओके, अब हम ऑप्शन नंबर बी, सी, ई देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, टीचिंग बिकम्स एन एक्टिविटी टू प्रमोट सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। So yes, it is about understanding level. Okay, and option number C, the teacher expects that student will be able to translate and interpret the meaning in their own words. यहाँ पे टीचर एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब स्टूडेंट अपने शब्दों में भी सारी बातों को रख सकता है, सारी बातों को ट्रांसलेट कर सकता है, सारी बातों को इंटरप्रेट कर सकता है। तो ये भी अंडरस्टैंडिंग लेवल का है। और ऑप्शन नंबर ई, द टीचर गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ एग्जाम्पल टू ब्रिंग होम द मेन आइडियाज़। ओके, सो यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स की बात हो रही है। ओके, तो ये भी अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं। तो नाउ विल इजीली गेट आवर आंसर, ऑप्शन नंबर 4। Next question is very easy. In which level of teaching the teacher's role is more active rather than being interactive? Okay, so easily it's memory level teaching because in the memory level of teaching, teacher's role is more active. So we can say that memory level of teaching as a teacher-centered. Okay, to the next questions. Next question is the communication process is active and interactive at a very high level in which of the following level of teaching? So यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कम्युनिकेशन लेवल जो है टीचर और स्टूडेंट की कम्युनिकेशन की लेवल, क्लासरूम में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू ही पढ़ाते हैं ना। तो वो कह रहा है कि कम्युनिकेशन उसमें बहुत हाई लेवल पे होता है। एक्टिव हम यहाँ पे टीचर को कह सकते हैं एंड इंटरैक्टिव जो इंटरैक्ट कर रहा है स्टूडेंट से। तो एक्टिव एंड इंटरैक्टिव दोनों हाई लेवल पे हो तो उसको क्या कहते हैं, वो कौन से लेवल की टीचिंग है, रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग है। इसको और हम इजी शब्दों में कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हाई लेवल की टीचिंग जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल ही है। सबसे नीचे की टीचिंग क्या है, मेमोरी लेवल।
रटना मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल उसके ऊपर, और सबसे जो हाई लेवल की टीचिंग है वो रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग है, जिसमें कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एबल हो जाते हैं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कोई इश्यू उठाते हैं उस पर बातचीत कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ओके हमारे आइडियाज़ रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस तरह की जो है वो हाई लेवल की कम्युनिकेशन होते हैं और वो रिफ्लेक्टिव लेवल के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमारा क्या फोकस होता है? ओके सो प्लीज चेक द ऑप्शन। सो लेट्स चेक द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग फैक्ट्स एंड आइडियाज़। रिलेशनशिप जो है फैक्ट्स एंड आइडियाज़ के बीच उसको प्रमोट करना, हाँ उसके बीच रिलेशन को खोजना और उसको प्रमोट करना। तो येस इट इज़ अ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। जो फैक्ट्स और आइडियाज़ की बात करें, जो एग्जाम्पल्स की बात करें, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है। सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या है? encouraging recalls and recognitions. No, it is about memory level. Raising of problem and seeing solution, it is reflective level. Yes, problem solving is about reflective level. Developing a sense of happiness, no, it's not matter, it's a wrong option. So option number 1 is right. So next question is again about understanding level of teaching. Okay, so come to the option. Option number A is the teacher takes the initiative in organizing subject matter. So again here teacher is active. So now we can easily find that it is about memory level of teaching. Okay. So here teacher क्या कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है स्टूडेंट के प्रैक्टिसेस को, और यहाँ पे टीचर एक्टिव है, तो ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। ओके सो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इट इज़ बेसिकली डिवोटेड टू हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स एंड टूल्स यूज ऑफ अ फैक्ट्स। तो यहाँ पे टूल और फैक्ट्स की बात हो रही है, रिलेशनशिप उनके बीच खोजा जा रहा है, तो क्या है? ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है ना। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ डायरेक्टेड एट प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कोलैबोरेटिव मैनर। तो प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। तो ये ऑप्शन नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज इट इज़ एम्ड एट द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ आइडियाज़ एंड फैक्ट्स। सो अगेन इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो हमारे आंसर मिल गया है ना। आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी एंड डी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। Now next question is reflective level of teaching is different from memory level of teaching because the pattern of communication that is involved in reflective level of teaching is, यहाँ पे कह रहे हैं कि reflective level of teaching different है, अलग है memory level of teaching से। क्यों? क्योंकि memory level teaching में क्या होता है कि टीचर एक्टिव होता है और वहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ पे मेमोराइज़ किया जाता है फैक्ट्स को, वहाँ पे कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती है, मगअप किया जाता है, रटा जाता है बातों को, है ना, इन्फॉर्मेशन को रटा जाता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। सो वी कैन से दैट कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बिकॉज द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन that is involved in reflective level of teaching is basically interactional. Okay, reflective level of teaching में हम interact करते हैं, स्टूडेंट जो है टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आर सक्सेसफुल स्टूडेंट इमर्ज विथ। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो स्टूडेंट में कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं, स्टूडेंट किस तरह से अपीयर होता है। ओके सो नाउ कम टू द ऑप्शन। ऑप्शन ए इज़ अ स्ट्रॉन्ग लॉजिकल बेसिस टू रिटेन द इंफॉर्मेशन। तो अगेन यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो ये क्या है? ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, रिटेन द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात हो रही है और उसे माइंड में रखने की बात हो रही है ना। तो ये क्या है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। ऑप्शन बी क्या है? एन enlarged store of tested insights of a generalized character. Yes,
इट इज़ अबाउट रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास स्टोर हो जाता है, टेस्टेड इंसाइट हो जाती है। इसका मतलब है कि अब हम सारी बातों को बहुत ही इजीली समझ पा रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग करते करते हमारे अंदर एक इंसाइट डेवलप हो जाती है, टेस्टेड इंसाइट डेवलप हो गई है कि अब हम बातों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और हमको सब अच्छे से समझ में आ रहा है। प्रैक्टिस करते करते हम उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हो गए हैं, है ना। जैसे कि फर्स्ट टाइम हम जब कोई मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो हमें समझ में नहीं आता है, बट जब हम लगातार उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आगे चलकर क्या होता है कि हम उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं एंड हम उसको देखते ही सॉल्व कर पाते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अ फॉर्म रिलेशनल स्ट्रक्चर इन द आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे रिलेशन की बात हो रही है, तो ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है। एन इन्हेंस्ड एबिलिटी टू डेवलप एंड सॉल्व प्रॉब्लम ऑन देयर ओन। तो जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो रही है तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है ना। हमने पहले भी बात की है कि जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो रही है तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सीइंग रिलेशनशिप एंड टूल यूज ऑफ अ फैक्ट। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है। So now we can easily get our answer. Option number 2 is right answer. B and D is about reflective level of teaching. Now come to the next question. In which level of teaching the activities of structuring, guiding and closely supervising the students' behavior predominates? तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या है? टीचर सेंटर्ड है। यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, गाइडिंग की बात हो रही है। तो ये किस लेवल की टीचिंग है? मेमोरी लेवल की टीचिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, वी स्टॉप हियर। वेरी सून विल कम विद अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। फॉर मोर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. You can join my online course for daily 1-hour discussion classes. You can WhatsApp me, call me on given number. Okay, thank you. Stay blessed. हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अर्चना सिंह और आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि हमेशा पूछे जाते हैं पेपर 1 एग्ज़ाम में। टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चंस होते हैं और जो क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो हमेशा ही रिपीटेडली आस्क क्वेश्चंस हैं, सो यू हैव टू कीप फोकसिंग. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग as a method can be used for. ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में क्या होता है कि हम आइडियाज़ जनरेट करते हैं और शेयर भी करते हैं। जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आइडियाज़ जनरेट करते हैं और जब हम कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो इस तरह की मेथड को ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड कहते हैं। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें कि पार्टिसिपेंट को आइडियाज़ जनरेट करने होते हैं और तुरंत ही उसको शेयर भी करते हैं। जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं दिमाग में उनको शेयर करना होता है, जनरेट करना होता है नए नए आइडियाज़ को। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. Brainstorming as a method can be used for generate new ideas in the area of interest. फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और मैं बहुत श्योर हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। सो प्लीज़ कीप फोकस, कीप इन माइंड. So now come to the next question. When a large number of students with different performance levels are there in the class for uniform imparting of educative interactions, a teacher should opt for a communication which. यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जब लार्ज स्टूडेंट हो, बहुत सारे स्टूडेंट हो जो कि डिफरेंट परफॉर्मेंस लेवल के हो और सब अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहते हो क्लास में, तब टीचर को कौन सा मेथड यूज करना चाहिए एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए? और यहाँ पे जो राइट आंसर्स हैं वो है टेक्नोलॉजी एनेबल. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ दीज इज अ नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स? इनमें कौन से एड्स जो है
वो नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स है। तो नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स क्या है? नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स आर दोज एड्स विच आर यूज्ड विदाउट projection. Okay, the aids which are used without projection, and in such aids there's no need of electricity or internet. Okay, it's a low budget and also not required much creative ability. So such aids are non-projected visual aids, and here the right answer is flashcard. सो नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स में किसी भी प्रोजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, किसी प्रकार की क्रिएटिविटी की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे राइट आंसर फ्लैश कार्ड्स है, बिकॉज स्लाइड्स में, ओवरहेड प्रोजेक्टर में, हैंड हेल्ड प्रोजेक्टर में सब में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, प्रोजेक्शन चाहिए होता है, क्रिएटिविटी चाहिए होती है ना। तो राइट आंसर इज फ्लैश कार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंस्ट्रक्शंस विच encourage live participation and interaction through online classes are called। यहाँ क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शंस है जो कि लाइव पार्टिसिपेशंस एंड इंटरेक्शंस को बढ़ावा देता है, ओके, इनकरेज करता है। कौन सा ऐसा पार्टिसिपेशंस है? यहाँ पे राइट आंसर है सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शंस। ओके, सिंक्रोनस interactions encourage live participations and interaction through online classes। ओके, जैसा कि मैं जब क्लास ग्रुप में डिस्कशन क्लासेस लेती हूँ क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के, तो क्या होता है, मैं सिंक्रोनस इंटरेक्शन करती हूँ। मैं क्वेश्चन डालती हूँ, आपको आंसर करने होते हैं, और जब तक आप आंसर नहीं करते मैं वेट करती हूँ, और आपके आंसर के बाद ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस डालती हूँ। तो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन। Now come to the next question. For optimizing learning outcomes, which of the following factors have been identified as most effective in terms of research evidence in the global context? So यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग, अच्छी लर्निंग के लिए कौन सा फैक्टर यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव है। ओके, सो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? We can easily understand that for effective learning outcome, the teacher related factor is most important. Okay, now come to the next question. Which of the following have been identified as key behavior contributing to effective teaching? There's 5 key behavior of effective teaching and 5 key behavior of helpful teaching, and questions always ask from key behavior and helping behavior. So please keep in mind the 5 key behavior of effective teaching, that are lesson clarity, instructional variety, teacher ask orientation, engagement in learning process, and student success rate. These are the 5 key behavior of effective teaching. Okay, so now come to the question. Now we can easily solve the question. Here lesson clarity is the key behavior, instruction variety is the key behavior, and engagement in learning process is the key behavior of effective teaching. So option number A, 1, 2 and option number 4. 1, 2 and 4. So here the right answer is option number A. Okay. Next question is, choose the person who has control over self, mode of communication and method of delivery in classroom. Okay, so it is very easy question, that the person is teacher only who has the control over self, mode of communication and method of delivery in classroom. Okay, now come to the next question. In which of the following modes of assessment the potential for increasing strict motivation is optimum? So here question is asking that ऐसा कौन सा असेसमेंट है, ऐसा कौन सा टीचिंग मेथड है जिसमें कि आंतरिक मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है, इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट तब होता है जब हम लाइव क्लासेस लेते हैं। ओके,
ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस व्हाट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, जैसे कि मैं ग्रुप में क्लास डिस्कशन क्लासेस लेती हूँ तो वो क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, और उस फॉर्मेटिव असेसमेंट में इंस्टिंक्ट मोटिवेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट। For more notes and classes, you can join our online course in which we discuss daily 1 hour's question answer series, okay, which will be very helpful for coming NEET JRF exam. So thank you, stay blessed. Hello everyone, welcome again to my channel. I am Archana Singh, and today's video I am going to talk about some important questions for NEET JRF. So without wasting time, let's begin. The very first question is, reflective level teaching is different from memory level teaching because the pattern of communication that is involved in reflective level teaching is basically option are linear, bottom up, interactional or transactional. Which one will be the right answer? Here the right answer is option number 4, transactional. Okay. Here reflective level of teaching is different from memory level of teaching. So what's happen in memory level of teaching? Memory level of teaching is a teacher dominated curriculum where methods like drill, revision and question answer series are done. Whereas in reflective level of teaching, learner occupies the primary role. Okay, in reflective level of teaching, students are primary and teacher assumes the secondary place, right? So you should remember all these concepts. Now come to the next question. The sequence of cultural institutions is communication is, so cultural institutions जो communication के हैं उनके sequence आपको बताने हैं. So please try to answer. Here the right answer is option number 1. Okay, family, school, religion and mass media. Right. Next question is, which of the following assessment procedure is conducted during an in-progress teaching learning session? So कौन सा teaching learning session है, कौन सा जो assessment है वो teaching learning session के during होता है? तो यहाँ पे right answer जो है formative assessment. I have already make video all in this topic and I have discussed in detail. So please go and check this all video. The next question is, dissolved oxygen, an important parameter of water quality, is essential for survival of, and this is very easy question. Here the right answer is option number 3, fish. Okay, dissolved oxygen, an important parameter of water quality, which is essential for survival of fish. The next question is, the research method which focuses on establishing causal relationship with control among variables, independent, moderator and dependent, is called, and here the right answer is experimental method. Experimental research is very important topic for a UGC NET exam and always question asked from it. So please keep in mind, I have already provided PDF notes about all this topic. So please go and check and keep in mind all these questions and related topics. So now we stop here. Stay blessed. Have a good day. Hello everyone, welcome again to my channel. I'm Archana Singh. Today's video is about ICT. We will discuss some important questions from ICT. So without wasting time, let's start. The very first question is, the data storage hierarchy consists of. Please check the options and try to answer. यहाँ पे डाटा स्टोरेज हायरार्की के बारे में बात की गई है, तो आपको ऊपर से नीचे से लेके ऊपर तक की हायरार्की को बताना है. वी ऑल नो द स्मॉलेस्ट इज बीट्स, राइट. 1 बाइट्स इक्वल टू 8 बीट्स. 1 बाइट्स में 8 बीट्स होते हैं. दिस इज द लास्ट ईयर आस्क्ड क्वेश्चन एंड हियर द राइट आंसर इज बीट्स, बाइट्स, fields,
records, files and database. Correct answer is option number second. First is bits, then bytes, fields, records, files and then database. This is the data storage hierarchy. Right. So right answer is option number second. Next question I have taken is, which of the following domain is used for profit business? And please check the option and try to answer. This is very easy question. And here the right answer is .com. .com domain is used for profit business. Next question is, which of the following represents billion characters? Options are terabyte, megabyte, kilobyte and gigabyte. Please check the options and try to answer. Here you can check the capacity. Kilobyte 1000, megabyte 1 million, gigabyte 1 billion, terabyte 1 trillion. You can check here. So according to the question, so here gigabyte represents the billion character, right? So the right answer is option number 4, gigabyte. Next question is, what is the name for a web page address? Domain, directory, protocol or URL? Which one will be the right answer? Here the right answer is URL. The full form of URL is Uniform Resource Locator. It is a protocol for specifying address on the internet, right? An address that identify a particular file on the internet, that is called URL, and it is a web page, right? So we can say that URL is an address. URL जो है वो एक एड्रेस है जो किसको आइडेंटिफाई करता है, वो फाइल्स को आइडेंटिफाई करता है किस पे, इंटरनेट पे. ओके वो इंटरनेट पे एक पार्टिकुलर फाइल को आइडेंटिफाई करता है, दैट इज कॉल्ड URL. सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, URL. URL is a web page address, right? And full form is Uniform Resource Locator. Next question is, with regard to a word processing software, the process of combining static information in a publication together with variables information in a data source to create one merged publication is called. Options are electronic mail, data sourcing, mail merge or spam mail. Which one will be the right answer? Here the right answer is mail merge. Okay, so what is mail merge? Mail merge is a handy feature. It is basically a handy feature that incorporates data from both Microsoft Word and Microsoft Excel and allows you to create multiple documents at once. Okay, so mail merge में क्या होता है, हम दोनों डाटा को मिला के बहुत सारे डाटा क्रिएट कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दोनों को मिला के हम बहुत सारे डाटा क्रिएट कर सकते हैं एक ही समय में. तो इसको क्या कहते हैं, इसको मेल मर्ज कहते हैं. ओके, सो हियर द राइट आंसर इज मेल मर्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड? प्लीज चेक द ऑप्शंस एंड ट्राई टू आंसर. It talks about the computer memory types from highest to lowest level. It talks about the hierarchy of computer memory from highest to lowest level. Right. Here we can check it by this image, computer memory from highest to lowest level. So here the highest level is CPU register, then change memory, then main memory, then magnetic disk, disk storage, optical disk and magnetic tape. Okay, so here the right answer is option number 3. CPU register is the highest level of computer memory, then change memory, then main memory and then secondary storage. Right, so the right answer is option number 3.
DAS is a type of memory circuitry that holds the computer startup routine. RAM, ROM or change memory. Here the right answer is ROM. Read-only memory is a type of memory holds the computer startup routine. Right. Next question is an unsolicited email message sent to many recipients at once is a worm, virus, threat or spam. Which one will be the right answer? Here the right answer is spam. Okay. An unsolicited email message sent to many recipients at once is a spam. Right. Next question is which of the following communication technologies employ only asynchronous communication? Video conferencing, email, forum, instant messaging. Which one will be the right answer? Let's first talk about what is asynchronous communication. Right. Asynchronous communication is the communication which happen not in sync, or in other words we can say that it happened not in the real time. Okay, it does not require the recipient immediate attention, allowing them to respond to their message at their convenience. Right. So एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम तुरंत रियल टाइम में कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, हम पहले मैसेज करते हैं, फिर उसका जवाब आता है, हम जो रिसिपेंट को पूरा टाइम देते हैं कि वो मैसेज का रिप्लाई अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस करें. ओके, and an example of asynchronous communication are email, online forum. Okay, so here please check the options. So video conference is not such type of communication. Instant messaging is also not. So here the right answer is B and C. So the right answer is option number 3. Okay, next question is SMTP is an acronym for, and here the right answer is Simple Mail Transfer Protocol. SMTP is an acronym for Simple Mail Transfer Protocol. So the right answer is option number 3. Simple Mail Transfer Protocol is an internet standard communication protocol for electronic mail transmission. Right. Next question is the convenient place to store contact information for quick retrieval in email is address box, message box, address book or message book. Which one will be the right answer? Here the right answer is option number 3, address book. Next question is a small text file stored on user's computer for some website in order to recognize and keep track of users' preferences is called cookie, report, log or history. Here the right answer is option number A, cookie. Okay. Cookie is a small text file stored on user's computer by some website in order to recognize and keep track of user preferences is cookie. If your skin barrier's been through too many harsh actives or you just want that plump, healthy glow, try it. It's packed with ceramides and sodium hyaluronate cross polymers that lock in moisture and hydration all day long. Plus, it's so lightweight and non-sticky, the second I apply it, it feels like my skin just chugged a tall glass of water. Over time, it has improved my skin texture and made my skin so soft and supple. I'm obsessed with it, and you'll be too. Buy a 5-star Blue Star AC for just ₹82. Fast cooling at never before prices. So here the right answer will be option number A, students' commitment. Classroom interactions are influenced largely by students' commitment. Okay. Next question is the emphasis in memory level teaching is on which of the following?
Okay, please check the question and try to answer. Here question talks about the memory level of teaching. Okay, we all know there are 3 levels of teaching: memory levels, understanding level, and the reflective level. And it is the very favorite topic of UGC NET exam. So please keep it in mind. And question always asks that which one is the highest level of teaching. So it is the reflective level. Okay, now we talk about the memory level of teaching. Herbert was the exponent of memory level teaching, and he described the following steps for the presentation of the model of memory level teaching: focus, syntax, social system, and support system. Okay. In memory level teaching, the facts and information of the cognitive levels are forcibly supplied to the brain of the student. Okay. Signal learning, chain learning, and stimulus response learning are emphasized, and it is teacher centered. Okay. So we can say that memory level of teaching is about rote learning. Rote learning is about memorization of information based on repetition. Okay. So we can say that there's no generating new ideas in memory level of teaching, and there's only. So such type of question we can solve by elimination method. So option number B, seeing of relationship among facts, is not about the memory level of teaching. And option number D, critical thinking, it is also not about the memory level. So we can say that the correct option is option number 2, ACE, organization of thoughts and ideas, systematic presentation to enable quick reproduction, and mastery of concept sequencing of facts. Okay. The next question is: student respect a teacher who is emotional, displays concern for student, has a powerful voice, or has a narcissist attitude. Which one will be correct? So here the right answer will be displays concern for students. Okay. Student respect a teacher who displays concern for student. Next question is: which of the learner characteristics will influence his/her perspective in a course of study? Which one will be correct? Please check all the options and try to answer. Options are learner's commitment, parents' interest in the learner, prior knowledge of learner, skill of the learner in the concerned area, family size of learner, and socio-economic background of the family to which the learner belongs. Which one will be correct? Such question we can solve by elimination method. Okay. So the learner's commitment is true. Parents' interest in learner is not true. Prior knowledge of the learner is true. Skill of learner in the concerned area is true. And family size of the learner is not true. So the true options are option number 1, option number 3, and option number 4. So 1, 3, and 4. So the right answer will be option number 1. Okay. Now come to the next question. Next question is: the performance of a student is compared with another student in which type of testing? We have already discussed this question. Okay. So we all know that the right answer is norm reference testing. Okay. In norm reference testing, we compare a student performance with another student. Okay. Okay. Now come to the next question. Now come to the next question. Which of the strategies in the list given below will be associated with direct teaching? Okay. What is direct teaching? Direct teaching method is in the method teacher stands in front of a classroom and presents the information. Okay. Teacher guide and give instructions to the student. So which one will be associated with the direct teaching? Such question we can solve by elimination method.
So promoting inquiry is not a part of direct teaching, because in direct teaching, teacher presents the information only. There is no promoting inquiry and focusing on concept. It is also not correct. So it is also not part of direct teaching. So promoting inquiry and focusing on concepts are the not part of direct teaching. And problem raising and problem solving, it is also not a part of direct teaching. So here the right answer will be option number 3, providing examples and explanation, giving review and recapitulations, and offering practice and feedback. Okay, all three are the part of direct teaching. All three are associated with the direct teaching. Okay, now come to the next question. Next question is, which among the following reflects the best quality of teaching in classroom? Best quality of teaching in classroom क्या है? कैसे हम इसको reflect कर सकते हैं? Through the use of many teaching aids in classroom, through the quality of questions asked by student in classroom, through full attendance in the classroom, through observation of silence by the students in classroom. Which one will be correct? So such questions are always asked in NET exam with different types. Okay. So here the right answer will be option number 2. Through the quality of questions asked by the student in classroom, we can define the quality of teaching in a classroom. Okay. So it reflects the best quality of teaching in the classroom through the quality of question asked by the students. Okay. Next question is, suppose as a teacher, you are training your students in public speaking and debate. Which among the following is most difficult to develop among the students? Control over emotions, concept formulation, selecting appropriate language, or voice modulation. Which one will be correct? So here the correct answer will be option number 1, control over emotions. Okay, if a student is in public speaking and debate, the most difficult to develop among student is control over student. Okay. Next question is, which of the following set of statements best describe the nature and objectives of teaching? Okay. So such question we can solve by elimination method. Teaching and learning are integrally related. That is right. There is no difference between teaching and training. It's not correct. Concern of all teaching is to ensure some kind of transformation in students. That is right. All good teaching is formal in nature. That is not right. A teacher is a senior person. That is not appropriate. And teaching is a social act, whereas learning is a personal act. That is right answer. So here the option number 3 is right answer. Teaching and learning are integrally related. And the concern of all teaching is to ensure some kind of transformation in students. And teaching is a social act, whereas learning is a personal act. So option number 3 is correct. Now come to the next question. Which of the following learner characteristics is highly related to effectiveness of teaching? Which one will be correct answer? Please try to answer. Prior experience of the learner, educational status of the parent of the learner, peer groups of the learner, or family size from which the learner comes. So it is very easy question, and in NET exam always question asks, such type of question always asked. So the right answer will be option number 1, prior experience of the learner. Okay, prior experience of the learner is the right answer. So the next question is, from the list of evaluation procedure given below, identify those which will be called formative evaluation.
So here the question is about formative evaluations. So come to the options and check that which one is not related to the formative evaluations. So here the option number A, a teacher awards grades to student after having transacted the coursework. It is not part of formative evaluations. It is about summative, because a teacher awards grades to student after having transacted the coursework. It is about summative. During interaction with student in the classroom, the teacher provides corrective feedback. It is a part of formative evaluation because it talks about during interaction with student in the classroom. Okay. The teacher gives marks to a student on a unit test. It is not part of formative. The teacher clarifies to doubt of a student in the class itself. It is a part of formative evaluation. So option number A, D and F. Sorry, option number B, D, F. Because option number E and A are not a part of formative evaluation. Option number A, the overall performance of a student reported to parent at every 3 months interval is not part of formative evaluations. So option number 4 is correct option. Okay, B, D, F, correct options. Okay, come to the next question. Next question is, all teaching should aim at ensuring learning. Okay, and all learning results from teaching. So which one will be correct? So all teaching should aim at ensuring learning. That is correct. And all learning results from teaching. That is not correct. Okay, so the right answer will be option number 3. A is true, but R is false. Okay. Now come to the next question. Which one will be the correct answer? Effectiveness of teaching has to be judged in terms of course coverage, students' interest, learning outcome of students, or use of teaching aids. Which one will be correct? So here the right answer will be option number 3, learning outcomes of students. Okay, effectiveness of teaching has to be judged in terms of learning outcome of students. Okay. Next question is, in which teaching method learners' participation is made optimal and proactive? Which one will be correct? Discussion method, buzz session method, brainstorming session method, or project method? Which one will be correct? So here the correct answer will be project method. By project method, learners' participation is made optimal and proactive. Okay. Next question is, one of the most powerful factors affecting teaching effectiveness is related to the... Please check the options and try to answer. Here the right answer will be education system. Okay, one of the most powerful factors affecting teaching effectiveness is related to education system. The next question is about the assertion and reasoning type questions. Assertion is formative evaluation tends to accelerate the pace of learning. That is true. And reason is as against summative evaluation. Formative evaluation is highly reliable. That is false. Okay, so assertion is true and reason is false. So here the right answer will be option number 3. A is true but R is false. Okay, now come to the next question. Which one of the following is a key behavior in effective teaching? Questioning, using student ideas and contribution, structuring, or instructional variety? Which one will be correct? So here the right answer will be instructional variety. Instructional variety is a key behavior in effective teaching. Okay. Next question is, from the list given below, identify the learner characteristics which would facilitate teaching learning system to become effective. Choose correct code. So such type of question, I always say that we can solve by elimination method. Okay, we can eliminate the wrong answer and then we will easily find the correct answer. So here option number A, prior experience of learner is true. Learner family size is wrong.
Aptitude of learner is true. Learner stage of development, true. A learner food habits and hobbies is false. And learner religious affiliation is false. So A, C and D is correct option. So option number 2 is correct. So right answer is option number 2. Next question is about assertion and reason type questions. Learning is a lifelong process. It is true. Learning is a lifelong process. Reason is learning to be useful must be linked with life processes. So reason is also true. So here the right answer will be option number A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Okay. So right answer will be option number 1. Which of the following set of statements represents acceptable propositions in respect of teaching-learning relationship? Okay. Question is which of the following set of statements represents acceptable propositions in respect of teaching-learning relationship? Choose the correct code. So here the option number 1, when students fail in a test, it is the teacher who fails, is right. Every teaching must aim at ensuring learning. It is also right. There can be teaching without learning taking place. It is also right. There can be no learning without teaching. There can be no learning without teaching. It is not right because there is learning possible without teaching. We can learn from everything. Okay. So this is not correct. A teacher teaches but learn also. This is right option. And the last one is real learning implies rote learning. This is not correct. So the correct answer will be option number 2. Okay. So option number 2 is correct. Come to the next question. Which of the following set of statements best represents the nature and objective of teaching and learning? Okay. Which of the following set of statements best represents the nature and objective of teaching and learning? Okay. Please check the question and try to answer. So option number A is teaching is like selling and learning is like buying. Is not correct. Teaching is a social act while learning is a personal act is correct. Teaching implies learning whereas learning does not imply teaching. Okay. So this is also right, and teaching is a kind of delivery of knowledge while learning is like a receiving it. Teaching is an interaction and is a triadic in nature whereas learning is an active engagement in a subject domain. Which one will be correct? This type of question we can solve by elimination method. So we can check that option number A is quite wrong. Teaching is like selling and learning is like buying is quite wrong. So all the options are wrong in which A is included. So option number 3 will be the right answer. Okay. Come to the next question. Next question is about assertion and reason type question. All teaching implies learning. This is correct. And reason is learning to be useful must be derived from teaching. This is not correct. Learning to be useful must be derived from teaching. No, it is not correct. So here the right answer will be option number 4. A is true but R is false. Okay. Next question is select the alternative which consists of positive factors contributing to effectiveness of teaching. Select the alternative which consists of positive factors contributing to effectiveness of teaching. Okay. So please check and try to answer which one will be the right answer. So let's check the options.
Teacher's knowledge of the subject, it is right. Teacher's socio-economic background, it is not right. Communication skill of the teacher, it is right. And teacher's ability to please the student, it is not right. Teacher's personal contact with student, not right. Teacher's competence in managing and monitoring the class transactions, it is right. So the answer will be option number D, A, C, F. Okay, by eliminating wrong answer, we can easily find the right answer. Okay. Identify the important element a teacher has to take cognizance of while addressing students in a classroom. Which one will be correct? Avoidance of proximity, voice modulation, repetitive pause, or fixed posture. Which one will be correct? So here the right answer will be option number B, voice modulation. जब प्राइवेसी प्रोटेक्शन के बिना हो हैकर्स के पास अथॉरिटी, फिर किस बात की साइबर सिक्योरिटी? आपको चाहिए क्विक हील टोटल सिक्योरिटी। ये देता है प्राइवेसी प्रोटेक्शन, एंटी ट्रैकर, सेफ बैंकिंग, पेरेंटल कंट्रोल, डेटा ब्रीच अलर्ट, रैंसमवेयर प्रोटेक्शन एंड ब्राउजिंग प्रोटेक्शन। क्विक हील, आज के लाइफ की प्रायोरिटी साइबर सिक्योरिटी। Hello everyone, welcome to my channel. In this video lecture, I'm going to discuss last 10-year asked question from teaching aptitude. We all know that last year asked question plays a major role to qualify any exam. So please go through these questions and I'm sure that it will help you to score high. So let's start. In this series, the very first question I have taken is a person can enjoy teaching as a profession when he options are has control over students, commands respect from students, is more qualified than his colleague, or is very close to higher authority. Which one will be correct? Here the correct answer will be option number B. A teacher can enjoy teaching as a profession when he commands respect from his student. Okay. Next question is, which one is the highest order of learning? Chain learning, problem solving learning, stimulus response learning, or condition reflex learning? Here the right answer will be condition reflex learning. Next question is, instructional aids are used by teacher to glorify the class, attract the students, clarify the concepts, or ensure discipline. So here the right answer will be clarify the concepts. Instructional aids are used by teachers to clarify the concepts. Okay. Now come to the next question. Diagnostic evaluation ascertains. Options are students' performance at the beginning of instructions, learning progress and failure during instructions, degree of achievements of instructions at the end, or causes and remedies of persistent learning problems during instructions. Which one will be correct? So here the right answer will be option number D, causes and remedies of persistent learning problems during instruction. In diagnostic evaluation, we find out the causes and remedies of persistent learning problems during instructions. Okay. Now we come to the next question. Next question is, maximum participation of students during teaching is possible through lecture method, demonstration method, inductive method, or textbook method. Which one will be correct? Here the right answer will be demonstration method. Maximum participants of students during teaching is possible through demonstration method. A demonstration method is a teaching method used to
communicate an idea with the aid of visuals such as flip charts, posters, PowerPoint. A demonstration is the process of teaching someone how to make or do something in a step-by-step process. Okay, that's why it is the best method of teaching. Now come to the next question. Which of the following is not a prescribed level of teaching? Memory, understanding, reflective, or differentiation. Which one will be correct? So here the right answer will be differentiation. Differentiation is not a prescribed level of teaching. Okay, now come to the next question. Education is the manifestation of perfection already in man, was stated by, and here the right answer is Swami Vivekananda. Okay, Swami Vivekananda had said that education is the manifestations of perfection already in man. Okay, now come to the next question. Attitude of the teacher that affects teaching pertains to, options are affective domain, cognitive domain, cognitive domain, or psychomotor domain. Which one will be correct? Here the correct option will be affective domain. What is affective domain? The affective domain involves our feelings, emotions, and attitude. This domain includes the manner in which we deal with things emotionally. Okay. Next question is, which one of the following is the best method of teaching? Lecture, discussion, demonstration, or narration? Which one will be correct? Here the right answer will be demonstration. It is the best method of teaching. What is demonstration? In my previous question, I have discussed that the demonstration method of teaching is a method in which we teach, we communicate with an aid of visuals, okay, such as flip chart, poster, PowerPoint, and we go through a step-by-step process. Okay, now come to the next question. Greater the handicap of the students coming to the educational institutions, greater the demand of the family, society, teacher, or state. Schoolwork can be overwhelming, especially when English is your second language. But I found a game changer, Grammarly Generative AI. So here the right answer will be teacher. Okay. Greater the handicap of the students coming to the educational institution, greater the demand of the teacher. Which one of the following is considered a sign of motivated teaching? Student asking questions, maximum attendance of the students, pin drop silence in the classroom, or students taking notes. Which one will be correct? Please try to answer. ऐसे जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछे जाते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, उनका ये फेवरेट क्वेश्चन है एंड इसका आंसर जो होगा वो स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चंस, ऑप्शन नंबर 1। जब क्लास में स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, तभी ये समझ में आता है कि स्टूडेंट्स जो टीचर ने पढ़ा रहे हैं वो उसको समझ रहे हैं. It is a kind of lively classroom and it is a sign of motivated teaching. Okay. Dyslexia is associated with mental disorder, behavioral disorder, reading disorder, or writing disorder. Please try to answer. So here the right answer will be reading disorder. Dyslexia is associated with reading disorder. आपने वो तारे ज़मीन पे पिक्चर देखे होंगे, जो तो उसमें जो चाइल्ड होता है वो डिसलेक्सिया से सफरिंग होता है. ओके, he is suffering from dyslexia, which is a kind of reading disorder. Okay. Identify the category of evaluation that assesses the learning progress to provide continuous feedback to student during interaction. Okay.
Options are placement, diagnostic, formative or summative. Which one will be correct? Here the right answer will be formative evaluation. Formative evaluation, okay. Formative and summative evaluations are a favorite topic of UGC NET. So please keep in mind that what is formative and what is summative. Formative evaluation is a type of evaluations which is conducted by teachers during the learning process. So please keep in mind that it is a kind of evaluations conducted by teacher during the learning process in order to modify teaching and learning activities to improve student attainments. Formative evaluations कब होता है? During the learning process. जब टीचर पढ़ाते हैं और उस समय जो प्रोसेस होता है, उस समय जो एवोल्यूशन की प्रोसेस होता है वो क्या होते हैं? फॉर्मेटिव एवोल्यूशंस. और समेटिव एवोल्यूशंस क्या है? Summative evaluations is a kind of evaluations which try to find out student achievement at the end of course. और summative evaluations क्या है? जब हम फाइंड आउट करते हैं कि स्टूडेंट ने क्या अचीव किया पढ़ाने के बाद, स्टूडेंट का क्या अचीवमेंट है इन द एंड, जब हम वो फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या है? समेटिव एवोल्यूशंस. Okay, so please keep in mind always question asked from this topic. So now come to the next question. What are required for good teaching? Diagnosis, remedy, direction, feedback. Which one will be correct? Please try to answer. Here the right answer will be option number A. Diagnosis, remedy, direction and feedback. All are equally important for good teaching. Okay. Did you just see that? What if I told you you can create a robot like this which you can control with the help of your brain? You can create a robot that dances on your command, or even a radar system that tracks a movement all by your hands. Sounds complicated? It's not. With the right guidance, even a beginner can create an awesome project like this. That's what exactly we are going to teach in this 30 days Arduino internship program. You will start from scratch. Which of the following attributes denote great strengths of a teacher? Okay, which one will be correct? Full-time active involvement in the institutional management, setting examples, willingness to put assumptions to the test, or acknowledging mistakes. Which one will be correct? Such type of questions we can solve by elimination method. Elimination method के थ्रू ये इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो रॉन्ग है. फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, ये कभी भी टीचर की स्ट्रेंथ को डिनोट नहीं करता है. तो ये ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत है. तो जिसमें भी ऑप्शन नंबर ए है, जिस ऑप्शन में भी ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल गलत होगा. ओके, तो हियर ऑप्शन नंबर ए आर इन ए सी डी जितने भी ऑप्शन है उनमें ऑप्शन नंबर ए है जो कि बिल्कुल ही गलत है. सो ऑप्शन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. ओके ओके, so setting examples, willingness to put assumptions to the test, acknowledging mistakes, these all are right options. So option number B will be the correct answer. Okay, now come to the next question. What are the characteristics of continuous and comprehensive evaluations? Continuous and comprehensive evaluations के characteristics क्या हैं? So options are: it increases the workload on students by taking multiple tests, it replaces marks with grades, it evaluates every aspects of student, and it helps in reducing examination phobia. Which one will be correct? This question also we can solve by elimination method. So here we can see that option number A is very wrong, quite wrong. It increases
the workload on students by taking multiple tests. It is not the characteristics of continuous and comprehensive evaluations. Now come to the next options. It replaces marks with grades. That is right. It evaluates every aspects of students, also right, and it helps in reducing examination phobia. It is also right. So here the option number D will be the right answer. Okay, B, C, D are right, but option number A is quite wrong. So such type of question we can solve by elimination method also. Okay, now come to the next question. Which of the following factors does not impact teaching? कौन सा फैक्टर्स है जो कि टीचिंग को इम्पैक्ट नहीं करता है? लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, टीचर्स नॉलेज, क्लासरूम एक्टिविटीज़ that encourage learning, or social economic background of teachers and student. Which one will be correct? This is very easy question. So here the option number D is correct. Socio-economic background of teachers and students does not impact teachings. Okay. The main objectives of student evaluation of teachers are to gather information about student weaknesses, to make teachers take teaching seriously, to help teachers adopt innovative methods of teaching, or to identify the areas of further improvement in teacher traits. Which one will be correct answer? So here the option number A is wrong. To gather information about student weakness is wrong. So here the right option will be option number B. B, C, D are correct answer. B, C, D are correct. To make teachers take teaching seriously, to help teachers adopt innovative method of teaching, to identify the area of further improvement in teacher's trait. A good teacher is one who inspires students to learn, give useful information, explains concept and principles, and give printed notes to students. Which one will be correct? So here the option number A is correct. Inspire students to learn. A good teacher is one who inspires students to learn. Okay. Next question is, achievement tests are commonly used for the purpose of assessing the amount of learning after teaching, making selections for a specific job, selecting candidates for a course, or identifying the strengths and weaknesses of learners. Which one will be correct? So here the right answer will be option number A, assessing the amount of learning after teaching. अचीवमेंट टेस्ट जो होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, किस पर्पस से यूज़ किया जाता है? असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग, कि टीचिंग के बाद स्टूडेंट ने क्या असेस किया, कितना लर्न किया, इसके लिए अचीवमेंट टेस्ट होता है ना. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the highest level of cognitive ability? Evaluating, knowing, understanding, or analyzing. Which one will be correct answer? So what is cognitive ability? Cognitive domain which relates to how the brain process information and thought. हमारा ब्रेन कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है और ये कैसे सोचता है, इस डोमेन को क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डोमेन. हमारी जो लर्निंग और टीचिंग की जो प्रोसेस है वो सारा किस में आता है? कॉग्निटिव डोमेन में आता है. तो ये पूछ रहा है कि विच वन इज़ द हाईएस्ट कॉग्निटिव एबिलिटी. ओके, अकॉर्डिंग टू द ब्लूम टैक्सोनॉमी द हाईएस्ट कॉग्निटिव एबिलिटी इज एवल्यूएशन. सो हियर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, evaluation. Okay, now come to the next question. Please do like and subscribe the channel because it will motivate me to bring another useful video for you all. Next question is, which of the following factors affect teaching? Choose the correct code to indicate your answer.
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट टीचिंग? कौन सा फैक्टर्स है जो कि टीचिंग को अफेक्ट करता है? प्लीज चेक द ऑप्शन एंड ट्राई टू फाइंड द करेक्ट आंसर. ओके, प्लीज चेक द ऑप्शन. Here all options are correct except option number 3, teachers biographical data. Okay, so such type of question we can solve by elimination method. So here the option number A is the correct option, correct answer, because in B, C, D option number 3 is included, which is not correct. So the right answer will be option number A. Okay. Which of the following set of statements reflects the basic characteristics of teaching? Okay, select the correct alternative from the code. So basic characteristics of teaching क्या है? Which of the following set of statements reflects the basic characteristics of teaching? Select the correct alternative from the codes. Please check the option and try to find out the answer. 2, 4. Hi. 5. Pentagon. Simple geometry. Life. Okay, here the right answer will be option number B. Teaching is related to learning. Teaching is a task word, while learning is an achievement word. And one may teach without learning taking place. Okay, so right option will be option number B. Next question is, which of the following learners' characteristics are likely to influence the effectiveness of teaching aids and evaluation system to ensure positive results? Okay, please check the options and try to find out correct answer. Learner's family background, age and habitation. This is a wrong option. Learner's parentage, socio-economic background and performance in learning of the concerned subject. This is also wrong. Learner's stage of development, social background and personal interests. This is also wrong. So here the right option is option number D, learners maturity level, academic performance level and motivational dispositions. This is the correct answer, option number D. The purpose of formative evaluation is to grade students' learning outcomes, accelerate student learning performance, check students' performance graph, or provide feedback to teachers' effectiveness. Which one will be correct? So here the right answer will be accelerate students' learning performance. We have in my previous question I have talked about formative evaluations. So what is the purpose of formative evaluation? Accelerate students' learning performance. Okay. Which combination of methods of teaching is likely to optimize learning? Okay, so please check the question and try to find out correct answer. Here the right answer will be interactive lecture sessions followed by buzz sessions, brainstorming and projects. Option number C is the right answer. Moral values can be effectively inculcated among the students when the teacher. Which one will be correct? When the teacher frequently talks about values, himself practice them, tells stories of great persons, talks of gods and goddesses. Which one will be correct? So the option number B is correct answer. Moral values can be effectively inculcated among the student when the teacher himself practice them. Okay. The best method of teaching is to impart information, ask students to read books, suggest good reference material,
or initiate a discussion and participate in it? Which one will be correct? So the best method of teaching is to initiate a discussion and participate in it. Okay. So option number D is the right answer. For an efficient and durable learning, learners should have ability to learn worldly, requisite level of motivation worldly, opportunities to learn worldly, or desired level of ability and motivation. Which one will be correct answer? So here the right answer will be option number D, desired level of ability and motivation. Okay. For an efficient and durable learning, learners should have desired level of ability and motivation. Right? By which of the following methods the true evaluation of students is possible? Evaluation at the end of course, evaluation twice in a year, continuous evaluation, or formative evaluation. Which one will be correct answer? Here the correct answer will be continuous evaluation. By the continuous evaluation method, the true evaluation of the student is possible. Okay. The aim of value education to inculcate in students is the moral values, the social values, the political values, or the economic values. Which one will be the correct? So here the correct option is the moral values. The aim of value education is to inculcate in students the moral values. Okay. Now come to the next question. Which of the following qualities is most essential for a teacher? He should be a learned person, he should be a well-dressed person, he should have patience, or he should be an expert in his subject. Which one will be correct? So here the right answer is he should have patience. Okay. So the most essential qualities of a teacher is he should have patience. Although he should be an expert in his subject, but most essential is he should have patience. Next question is, a teacher is said to be fluent in asking questions if he can ask meaningful questions, as many questions as possible, maximum number of questions in a fixed time, or many meaningful questions in a fixed time. Okay, so here the right answer will be option number D, many meaningful questions in a fixed time. Next question is, when some students are deliberately attempting to disturb the discipline of the class by making mischiefs, what will be your role as teacher? Okay, so here the right answer will be option number D, giving them an opportunity for introspection and improve their behavior. Okay, so right answer will be option number D. Next question is, suppose a student wants to share his problems with his teacher and he visits the teacher house for the purpose. The teacher should, स्टूडेंट जो है वो अपना प्रॉब्लम्स टीचर से शेयर करना चाहता है और वो टीचर के घर गया है, तो इस बारे में टीचर को क्या करना चाहिए? So please check all the option and try to find out correct answer. Okay, so here the right answer will be extend reasonable help and boost his moral. Okay, टीचर्स को हेल्प करना चाहिए और उसके मोरल को बूस्ट करना चाहिए. Okay, so hope this video was helpful for you all. So please like, share and subscribe and hit the bell icon for latest notification. Stay with archana@jareb.in. Thank you. Hi friends, myself Archana Singh. Welcome again to my channel. In this video lecture, I am going to discuss about communication aptitude. Communication aptitude is a very important part of our UGC NET paper 1 syllabus.
So in this video, we will discuss some previous year asked questions which were recently asked in NET exam. So after going through these questions, you will get an idea about the exam pattern. You will get an idea that which type of questions may be asked in coming NET exam. So please go through these questions. Now let's discuss some brief introduction about communication. What is communication? The term communication is derived from the Latin word communis and which meaning common. This question was also asked in previous NET exam that communication is derived from which word. So you have to keep in mind that it is derived from Latin words. A process through which individuals mutually exchange their ideas, values, thoughts and feelings and actions with one or more people. That is called communication. Okay? In the process of communication, there's a sender who encodes a message and there's a receiver who decodes the message. Okay? And after decoding the message, he sends feedback. The receivers send his feedback to the sender. And sender again encoding the message and again receivers decode message and then have feedback. In this process, in this way, the communication process continues. So now come to the questions. In this series, the very first question I have taken is, in a classroom, the probability of message reception can be enhanced by options are establishing a viewpoint, exposing the ignorance of students, or encouraging the information load. What will be the correct answer? Please try to answer. Such type of questions we can solve by using our common sense. So here the right answer will be establishing a viewpoint. By establishing a viewpoint in a classroom, the probability of message reception can be enhanced. The next question is, a good communicator begins his or her presentation with a. Options are complex questions, non-sequitur, repetitive phrase, or icebreaker. Here the right answer will be icebreaker. A good communicator begins his or her presentation with the icebreaker. What is an icebreaker? Icebreaker is an activity or game designed to welcome and warm up the conversation among participants in a meeting or training class. Okay, so it is an activity to welcome or to warm up the conversation among participants in a meeting or training class. Now come to the next question. The classroom communication should essentially be contrived, empathetic, abstract, or non-descriptive. Which one will be correct answer? So here the right answer will be empathetic. Classroom communication should essentially be empathetic. What is empathetic? Empathetic means showing an ability to understand and share the feeling of another person or the student. The next question is, the spatial audio reproduction in a classroom can reduce the students'. Options are cognitive load in understanding, respect for the teacher, motivation for excellence, or interest in technology orientation. Which will be correct? Please try to answer. So here the right answer will be option number 1, cognitive load in understanding. The spatial audio reproduction in a classroom can reduce the students' cognitive load in understanding. Okay. So in this way, it will help
student to understand. The next question is the interaction between a teacher and students creates a zone of proximal. Options are difference, confusion, development, or distortion. Which one will be correct? Hope you will easily mark the correct answer. And here the option number 3 is correct. The interaction between a teacher and students create a zone of proximal development. Okay, all questions are previous year asked questions, and if you will go through it, it will definitely help you in exam. You will check and you can get an idea that which type of questions may be asked in exam, in coming NET exam. Classroom communication is the basis of social identity, external inanities, biased passivity, or group aggression. Which one will be correct? Please try to answer. Here the right answer will be social identity. Classroom communication is the basis of social identity. Okay, now we come to the next question. Positive classroom communication leads to, options are cohesion, submission, confrontation, or persuasion. Which will be correct answer? Here the right answer will be persuasion. Positive classroom communication leads to persuasion. What is persuasion? Persuasion is something meant to get you to do or to believe something. Persuasion is the act of influencing someone to do something or to change their mind. Okay. Next question is expressive communication is driven by, options are passive aggression, encoders, personality characteristics, external clues, or encoder-decoder contract. Which one will be the correct answer? Expressive communication is driven by. So here the right answer will be option number 2, encoders, personality characteristics. Expressive communication is driven by encoders' personality characteristics. In basic terms, humans communicate through a process of encoding and decoding. The encoder is the person who develops and sends messages, and the decoder interprets the message for themselves. Decoding is the process of turning communication in thought. For example, in classroom, teacher encodes a message and students decodes the message for themselves. So in this way, communication process continues in the classroom. Next question is effective communication presupposes, options are non-alignment, domination, passivity, or understanding. What will be the correct answer? Effective communication presupposes what? Please try to answer. Here the right answer will be understanding. Okay. Effective communication presupposes understanding. Next question is every communication has to experience. Options are manipulated emotions, anticipatory excitement, the issue of homophils, or status of dislocation. What will be the correct answer? Every communicator has to experience. And here the right answer is option number 2, anticipatory excitement. Okay. Every communicator has to experience anticipatory excitements. Next question is the choice of communication partner is influenced by the factor of, options are
proximity, utility, loneliness. Option number 2, utility, secrecy, dissonance, deception, or dissimilarity, dissonance, or deviance. What will be the correct answer? The choice of communication partner is influenced by the factors of proximity, utility, and loneliness. Okay. So here the right answer will be option number 1, proximity, utility, and loneliness. Influenced by the partners, influenced by these factors. Next question is, imagine you are working in an educational institution where people are of equal status. Which method of communication is best suited and normally employed in such a context? Options are horizontal communication, vertical communication, or corporate communication. Which one will be the correct answer? This is very easy question. Yeah, so option number 1 is correct, horizontal communication. Horizontal communication also called lateral communication, and it is the practice of sharing information between employees, departments, and units within the same level of organization. Okay. Hope you understand about horizontal communication. Now we come to the next question. Next question is, in a classroom, a communicator's trust level is determined by, options are the use of hyperbole, the change of voice level, the use of abstract concepts, or the use of eye contact. Which one will be the correct answer? Please try to answer. So here the right answer will be eye contact. In a classroom, a communicator's trust level is determined by his eye contact. Okay. Now we come to the next questions. Most often the teacher-student communication is, options are spurious, critical, utilitarian, or confrontational. Which one is correct? Here the correct answer will be utilitarian. Most often the teacher-student communication is utilitarian. Okay. What is utilitarian? Utilitarianism is the moral doctrine that we should always act to produce the greatest possible balance of good over bad. It is a philosophy or belief suggesting that an action is morally right if the majority of people benefited from it. Okay. Now we come to the next question. Attitudes, actions, and appearances in the context of classroom communication are considered as, options are verbal, non-verbal, impersonal, or irrational. Which one will be the correct answer? Okay, here the right answer will be non-verbal communication. Attitude, actions, and appearances in the context of classroom communication are considered as non-verbal communication. Non-verbal communication is the transmission of messages or signals through a non-verbal platform such as eye contact, facial expressions, gesture, posture. Today scholars argue that non-verbal communication can convey more meaning than verbal communication. Okay. Next question is, every type of communication is affected by its, options are reception, transmission, non-regulation, or context. Which one will be correct? Please try to answer. Every type of communication is affected by its, and here the right answer is context. Every type of communication is affected by its context. Context is the situation in which something happens
or that caused something to happen. Okay. Now let's discuss some next questions of this section. Using the central point of the classroom communication as the beginning of a dynamic pattern of ideas is referred to as. Options are systemization, problem orientation, idea protocol, or mind mapping. Which one is correct answer? Okay, here the right answer is mind mapping. Okay. Now let's discuss next question. Swapping of encoders decoders role in communication happens due to. Options are cognitive disruption, semantic noise, feedback analysis, or weak channelization. Which one will be the correct answer? Okay, here the correct answer is option number 3, feedback analysis. Encoders decoders roles in communication happens due to the feedback analysis. Okay, what is feedback? Feedback refers to the response or reactions of receivers to the sender's message. When we react on the message, when we say our own ideas about the message, this is feedback. When message reaches to the receivers, he decodes the message and sends his response to his sender to complete the communication process, and that is called feedback. Okay. Next question is, a communication process can be considered complete when the sender transmits the messages enter the channel, the message leaves the channel, or the receiver understands the message. Which one will be correct? Please try to answer. This is very easy question. A communication process can be considered complete when. Okay, here the right answer will be option number 4, the receivers understands the message. Okay, communication process can be considered complete when, only then, जब रिसीवर्स जो है वो मैसेज को अंडरस्टैंड कर लेता है, वो समझता है पूरी तरफ से मैसेज को, तभी वो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट समझी जाती है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कस्टमर राइट्स टू अ बैंक, काइंडली सेंड मी अ स्टेटमेंट ऑफ माई ट्रांजेक्शंस इन माई सेविंग बैंक अकाउंट during the last 3 months. In terms of communication, it will be called, what it will be called? Input, message, output, or feedback. Which one will be correct? Here the correct answer is message. A customer write to a bank, kindly send me a statement of transaction in my saving account during the last 3 months. In terms of communication, it will be called a message. Okay. Next question is, non-verbal communication is considered as. Options are formal, culture free, informal, or precise. Non-verbal communication is considered as. Which one will be correct answer? Please try to answer. Here the non-verbal communication is considered as informal. Yeah, we have earlier discussed that what is non-verbal messages. Okay. So here the right answer will be informal. Non-verbal communication is considered as informal. Next question is, classroom communication is. Options are like a computer program, dictatorial, purposeful, pragmatic. Now choose the correct option from those given below. Which one will be the correct answer? So here the correct option is option number 2, B and C. Classroom communication should be purposeful and pragmatic.
Pragmatics refers to how words are used in a practical sense. Okay. In the context of communication, usual sequence is, which one is usual sequence? Please check all the options and try to answer this question. Which one will be the correct option? Here the correct option is option number 3. The communication usual sequence is communication, then language, then society, and then civilization. Okay. Here the right option is